नमस्ते. So now open your bare acts to part 3. So सबसे पहली बात जो याद करने की है इस section में से that we are in part 3 now. So where are fundamental rights given in the Constitution of India? That's given in part 3, right? So part 1, the Union and its territories. Part 5, the Union. Part 2, citizenship. Part 3, fundamental rights. What you can do is you can pause the lecture here and check whether I just said the parts correctly and write down the same parts in your notes as well. So we are in part 3, fundamental rights. Where are the fundamental rights given? Part 3. Now since this is a very heavily MCQ oriented module, so we are going to be covering out what all is being said from an MCQ perspective that the examiner of any law entrance, whether it's LLB, LLM, Judiciary, from the bare act, can ask you. Alright, so the pretty much the core questions, they remain the same. So article 12, ये article याद करने वाला है, that is the article number, alright. So definition in this part, which part? Part 3. Unless the context otherwise requires, so unless they specify otherwise, state includes the government and parliament of India. So your note, write this down. State is equal to government plus parliament of India. So executive and the legislature, alright. तो इसको हम जरा break down करके ऐसे आपने basically चीज निकली है. Government and Parliament of India, and the government and the legislature of each of the states. So government plus legislature of each of the state, that is executive and legislature both. But the crucial bit is, and all local or other authorities within the territory of India. Local or other authorities within the territory of India. So write this down. All local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. Now we come to the what is the question that the examiner can ask from this specific article. Alright, so they can ask you, as per article 12, the state includes option A, the government and parliament of India, option B, government and legislature of each of the states, option C, all local or other authorities, and option D, all of the above. What is the answer? All of the above. So it is, and I can also create an MCQ if I were the examiner. Then government and parliament of India, government and legislature of each of the state को एक जगह रख दूंगा. Let us say एक private सी body, let us say ICICI Bank, HDFC Bank रख दूंगा. And then basically वो चीज़ तो यहाँ specified नहीं है. So that is not included in the definition of the state. So if you are watching this in your LLM course, तो वहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन केस लॉ मॉड्यूल्स का अलग एक मॉड्यूल मैंने बनाया हुआ है, वहाँ से आप आर्टिकल 12 के केस लॉज देख लेंगे. LLB वालों आपको ऐसी कोई जनता basically ज़रूरत नहीं है, but article 12 remains the same for both the exams. Alright, so within territory or under the control of government of India, मुसीबत ये है कि आगे जाके ये दिक्कत आती है, वो जो केस लॉ जो है जी, other authorities. So for example other authorities. Now there's basically a test कि जी कैसे हम other authorities में किस organization को define करें. So there are a multitude of case laws which we not get into the MCQ portion of the module, but for example SBI, LIC, जो कि primarily they are controlled by the government, so they will be classified as state for the purposes of this part. And what is the purpose of this part? That the state shall not violate your fundamental rights. So before they have gotten into the constitution makers, before they've gotten into the concept of fundamental rights, they are telling you who the state in this entire part is. All right, so it is government and parliament of basically government of India and parliament, government of each state and parliament or the legislative assembly of each state, and then आपका ये legislature of each state, and then तीसरा all other authorities. All right, so BCCI के ऊपर एक case law है. BCCI का बस एक चीज़ याद रखिए, BCCI is not state. Technically speaking, we don't have a government Indian cricket team. This is a private NGO. तो इनको भी खिलाफ basically case लगा हुआ था. तो ये case लगते क्यों हैं? So that let us say that if someone alleges, for example, that BCCI has violated my fundamental rights, so most of the fundamental rights are only available against the state. So article 12 is telling you what the state is. All right, and then ONGC, SAIL, etc. all primarily will be by the government, because government नहीं है सारा काम. They are primarily government run organizations, so they will be classified as state. And once they are classified as state under article 12, they cannot violate your fundamental rights. That is not to say that private companies can, but majority of the fundamental rights are only available when it's the state gets involved. तो state पहले उन्होंने article 12 में define कर दिया. अब article 13 पे आते हैं, which is a crucial article.
Now, doctrine of eclipse and severability, I'm attaching 2 separate lectures within the course. So I won't go into the nitty-gritty details of eclipse and severability, all right? So because they're already, they're ready, and I've dedicated 2 separate lectures from YouTube, I'm going to be attaching them within the course. But we will just see what all other MCQs that the examiner can ask. But where is doctrine of eclipse enshrined in which of the article of the constitution? That is article 13. 13 याद करने की ज़रूरत है as an article number. It's very, very crucial. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. So either they are inconsistent with fundamental rights given where part 3, or in derogation of the fundamental rights कि थोड़ा सा they derogate, थोड़ा सा घटाते हैं fundamental rights के effect को, or they are in conflict with fundamental rights. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution. These are pre-constitutional laws, because the constitution, commencement of this constitution का क्या मतलब है? आर्टिकल जाइए सीधा पॉज कर लीजिए लेक्चर, चले जाइए 394 पे, ऑलराइट 394 अपनी बैराक में खोलिए, देखिए कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्ट एन एक्ट कब करी थी? 26 नवंबर 1949. कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कब है? 26 जनवरी 1950. और जैसे ही मैं ये बोलूँ तो 3 इंपॉर्टेंट हमारे डे स्टैटिक जीके के भी मार्क होने चाहिए. 24 जनवरी को क्या होता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे. 25 जनवरी को क्या होता है? नेशनल वोटर्स डे. 26 जनवरी को क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट. तो पहले वोट डालने से पहले इंटरनेशनल एजुकेशन डे, पहले एडुकेट हो जाइए, फिर वोटर बन जाइए, फिर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. बट व्हेन डिड वी अडॉप्ट एन एक्ट? प्रियम्बल से देख लीजिए, 26 नवंबर, ईयर 1949. वेरी फ्रीक्वेंट एमसीक्यू of this constitution insofar as they are inconsistent with the provisions of this part. Which part are we in? 3. Shall compulsorily है. To the extent of such inconsistency, मतलब पूरा कानून नहीं, only the part which is violating, which is inconsistent or in derogation, be void. अब thanks to the doctrine of eclipse, this word void is basically read as eclipsed या suspended या in hibernation. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का अगला वाला लेक्चर चेक कर लेंगे तो ये पूरा 13 क्लॉज 1 तो आपको वहाँ से पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. मैं उसकी डिटेल में भी यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैंने वहाँ केस लॉ बताया हुआ, मैंने उसके फैक्ट बता रखे हैं, सब कुछ बता रखा है, अगले लेक्चर में आप देखेंगे. देन उसके बाद आप डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी देखेंगे, विच इज बेसिकली रिलेटिंग टू दीज वर्ड्स टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी. नाउ वी कम टू क्लॉज 2. तो ऊपर से हम 13 देख लेते हैं. द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ. तो स्टेट कौन सा स्टेट? आर्टिकल 12 वाला स्टेट, विच was Government of India, Parliament, Government of State, Legislature of State, all local or other authorities within the territory of India, or any body under the control of the Government of India. तो वो कौन सी होंगी? कौन सी ऐसी authority? Those embassies outside, abroad, they are authorities which are under our control, right? They will classify as state under Article 12. So when they say the state shall not make any law, that is basically Article 12. एक वाला स्टेट which takes away or abridges the right. abridges मतलब शॉर्ट करता है राइट, मतलब अगर एक राइट 100% है तो उसको मतलब छोटा करके 10% कर देगा, तो छोटा कुछ भी नहीं हो सकता. फंडामेंटल राइट आपका मौलिक अधिकार आप ही के पास रहेगा. द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, अगेन पार्ट 3, एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड. वो कह रहे जी अगर आपने कुछ भी कानून बनाया विच इज अल्ट्रा वायरीज और अल्ट्रा वायर्स, कई लोग कहते हैं, बट आई प्रेफर टू प्रोनाउंस इट एज अल्ट्रा वायरीज, दैट इज बियॉन्ड द पावर्स, इट शैल बी वॉइड. काट के फेंक दिया जाएगा वो कानून. यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का लेक्चर लगा हुआ है, प्लीज कृपया करके सारी डिटेल्स ले लीजिए. देन वन मोर एमसीक्यू. In this article, unless the context otherwise requires, law includes. So they can ask you, law under Article 13 contains what or includes what? Includes, pointer बना लीजिए. Law is equal to लिखे, law under Article 13 लिखे, is equal to ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage. All of these mean the word law under Article 13. All right. This is important. Now, if you scan this article, you won't find personal laws here. That is one more question. Which of the following is not mentioned under the context of law in Article 13? The correct option is personal laws. तभी that is why we want a UCC, a Uniform Civil Code की हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का सारा कानून जो पर्सनल चलता है अपना हटाओ. We want a UCC as enshrined in Article 44. Pause the lecture here. Check what 44 says in DPSP, that is in Part 4. ठीक है जी. अच्छा, जब आप वापस आए
then also can write in your note, Goa is the only state to have implemented the UCC in India. All right. Law and force, yeah, आप एक बारी पढ़ लेंगे. I don't think that I need to read it out on the screen. But now there is this amendment. Clause 4 was inserted into Article 13 by an amendment. So in your bare act you will see this, ये 1 सा लिखा हुआ है. Alright, तो ये 1 जो लिखा हुआ है, जरा नीचे जाएं और देखें in the footnote. It says inserted by the Constitution 24th Amendment Act 1971. Great. How many times has Article 13 been amended? Once. By which amendment? The 24th amendment. This was primarily the amendment that was challenged in Keshwanand Bharti, but वो चीज़ बाद में देखेंगे once we are on very solid footing as per the Constitution. So it says nothing in this article shall apply to any amendment of the Constitution made under Article 368. Time to pause the lecture. Time to go to Article 368 and just see what it says. As in the title, जो bolded part, it will say amendment. Alright, so वहाँ पे procedure दे रखा है. How do you amend basically the Constitution? Article 368 पे एक dedicated lecture तो पढ़ा ही हुआ है कोर्स में, and this is under part 20. तो अगर मैं बात करूँ जब से मैंने ये lecture शुरू करा, part 1 the Union and its territories, part 5 the Union, part 2 citizenship, part 3 fundamental rights, part 4 DPSP, part 5 के बारे में तो बात कर चुका हूँ, part 20 this is amendment, right? अच्छा, और जब आप IPC का मॉडल करेंगे, chapter 20 of offenses relating to marriages, सब कुछ कनेक्ट करके चलते रहना है हमने. ऑलराइट, तो जब आप यहाँ तक अब आप पहुँचे हैं 14, तो मैं अगले लेक्चर में ही काम करूँगा, बट उससे पहले अब हमने एक टेबल बनाना शुरू कर देना है. इट सेज राइट टू इक्वालिटी हियर इन द बेयर एक्ट एंड इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 14. जरा नीचे जाइएगा बेयर एक्ट में एंड गो टू 19. ऑलराइट, तो 19 में आपको दिखेगा राइट टू फ्रीडम, सो दैट्स अनदर सब हेडिंग. बट राइट टू इक्वालिटी एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18. सबसे पहले ये नोट बनाइए एंड देन वी गो टू 19 में आपको सारा वो बेसिकली जो हमारे जो 6 ब्रॉड फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मेन है राइट टू इक्वालिटी है, आपका राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, हम बेयर एक्ट में देख देख के नोट करेंगे. ऑलराइट, तो अगर आप राइट टू इक्वालिटी देखें तो 14 to 18. अब आप 19 के बाद जाएंगे, 22 के बाद देखिएगा तो वो कहेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नहीं. Alright, so right to freedom will go from 19 to 22, then it will start to 23 and 24, and then ऐसे ही 25 पे आपको फिर एक और एक हेडिंग मिल जाएगी. तो वो जैसे जैसे हमारी मुलाकात होगी तो वैसे वैसे हम ये लोग काम कर लेंगे. So this is right to equality, extending from article 14 to 18. Now please take down notes from 13 का सारा वाला काम, and then I'm going to be posting a lecture. 15 is there. I'll post a lecture on 14. We'll then go to 16, 17 and 18, and then basically sequence wise में हम सारे के सारे we are just going to extract out all the MCQs that the examiner can ever ask you in this specific module of your respective course. Alright, चलिए see you now in the Eclipse and severability वाला काम कर लेते हैं and then फिर आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स के साथ. Alright, take care, bye.